हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक हमारा हाउ वी कैन मेक फ्री लोगो इन जस्ट 5 मिनट्स। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो साइट है thehoth.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इस पर क्लिक करके इसे रीलोड करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम लोड करेंगे तो ऑफ कोर्स लोड करेंगे। तो इट विल लुक लाइक दिस। सबसे पहले तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है बिकॉज यू वांट टू क्रिएट योर न्यू लोगो। So here is the blank screen. So first you need to add the symbol for your logo. So you can choose your category. So मैं जैसे कि वेब के लिए काम करता हूँ, मेरा कंपनी जो वेब से रिलेटेड है, तो मैं वेब के लिए चूज़ करूँगा यहाँ पे। तो जैसे मैं वेब पे क्लिक करूँगा तो वेब से रिलेटेड आइकन यहाँ शो हो जाएंगे। ओके, these are the icons for web. So I will select one icon. तो मैं किसी अच्छे आइकन के लिए देख रहा हूँ अभी। I think this is work for me. So you can drag your icon symbol and you can resize it also. So आप जितना चाहें इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ये आपका सिंबल हो गया। और आपका अगर इसका कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज होता है इससे। जैसे कि अभी ये ओशन कलर है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है लाइक दिस, ओके। और अभी कीबोर्ड का कलर चेंज करना हो वाइट से ऑरेंज, बट वाइट ही अच्छा लग रहा था तो we will shift to white. ओके, ये हो गया आपका सिंबल तैयार। अब टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे जस्ट क्लिक किया हमने और ये आ गया टेक्स्ट। तो इसमें आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जो भी कंपनी का नाम है। फॉर माई कंपनी इट्स द वेब यूनिवर्स, ओके। और आप इसका फॉन्ट, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। I will like this. और अगर आपको अपनी कंपनी की एक टैगलाइन भी देनी है तो जस्ट उसके नीचे एक सेलेक्ट कीजिए और टैगलाइन जैसे कि लर्निंग इज फ्री नो, और इसको स्मॉल कर दीजिए, ओके। So this will look like this. You can add more shapes in it like this, but I won't prefer it.
or you can make your business cards of this logo like this. These are decent business cards, so you can make that also. And in upload image, you can upload your icon image, so you can choose that one also. So that's it. Or you can change the background color also. Okay, so this is my logo. It is ready now. So now what to do next? You have to click on save and download. So you just need to type your email ID and the site will send the zip file. So I'm typing the web news team at gmail.com. So when you click save and continue, it will send you a zip file in your mail. So मतलब इस वेबसाइट को किसी भी तरह के आपके क्रेडिट कार्ड और किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं होती है. देयर इज़ नो नीड ऑफ क्रेडिट कार्ड. बाकी जो और अदर वेबसाइट्स उनमें आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेते हैं उनसे, फिर उनमें आपके कुछ प्लान्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं आप लोगो डाउनलोड कर पाते हैं, पर इसमें नहीं है. सो व्हेन आई क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, it will send an email. So I have already opened my Gmail in the tab. So when I refresh, okay, the logo has been sent. I got one mail. So this is the zip file, and in the zip file you will get the .png file, .jpg file, .svg file. So these are different type of image files. So you will get all of them, and also you will get a link for it for to edit your logo in future. So if you want to modify your logo, just copy that link and paste it and edit your logo. So that's it for now, guys. Thanks for watching. Please like, subscribe and share if you like it.